Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Muhammad Aftab Akram, serving as Head of Material Science and Engineering Department at PARC, Austria, Fachhochschule Institute of Applied Sciences and Technology. Previously, I was serving as Associate Professor at NEST, and I have more than 10 years of experience, teaching experience, and I have also completed several R&D and industrial projects. Here at PAFIST, we are aiming to provide quality education not only through engineering knowledge, but via involvement of problem-based learning as well, so that our graduates, they are market ready, either to perform as entrepreneurs or they can provide engineering solutions to the industry and the society. Currently, we are offering MS and undergraduate program from this semester, fall 2022, and we are planning to launch a PhD program from spring 23. In order to support our programs, we have state-of-the-art labs, mostly equipped with modern equipment acquired from Europe, US, and other advanced countries. Our BS program is unique in a sense that it applies Austrian model of Fachhochschule Metallurgy. So what is our Austrian model of Fachhochschule Metallurgy? It involves 500 hours of industrial training during the degree program. So every student has to spend 6 weeks, almost 6 weeks, every year during summers at the industry. So this industrial training program of 18 weeks has several benefits, not only for the department, but for the student and for the industry as well. Industry will have the trained graduate students who they can hire them as their intern engineers, and for the department they can bring the industrial problems to work as projects, and they can also work on those projects as their final year projects for the students. So involvement of industrial experts in every course for few lectures is also mandatory in our degree program. We invite guest professionals from the relevant field to deliver some lectures in every course. We have strong ties with our international collaborators, mostly from China, for the dual degree programs and for the exchange programs, and for the establishment of research centers. Now I will request Dr. Gufran to briefly explain about the learning and the experimental facilities. Dr. Gufran, please. Thank you very much. Hi, I'm Gufran Rahman, currently Assistant Professor at Department of Material Science. In 2021, I completed my PhD degree in chemical engineering from University of Manchester, UK. And research areas of my interest are in process automation and advanced materials. Material science area especially interests me the most because of its applied nature and its applicability to all necessities of life. So for our department facilities, we offer smart classrooms and auditorium teaching facilities, which basically involves integrated AI camera and audio systems to enable recording of all lectures and also live interaction, which is aims to facilitate the learning process for our students. In addition to that, we have interactive and blending learning features in which basically in our taught courses, we have interactions with lectures with industrial professionals as well as foreign professors to have an insight of over demanding trends, updated trends going on globally. And every semester we are also planning for industrial visits and excursions to have an industrial insight, and also to have industrial projects relevant to, and our experiment facilities are also industrial driven, so that as our vision is focused, that we have to focus the studies on applied and skilled level. Our faculty is working very hard to find the best internship opportunities for our students to have this industrial exposure from the year one. So the students are well skilled from the start till the end, and according to the requirement of the industry. So our institute environment is very surrounded by natural hilly areas, so it is a very friendly campus and has a very calm learning atmosphere. So these, in addition to learning environment, we also have sports facilities, and including all sorts of student societies in which students can get involved to improve their mental and physical health, as well as to improve their communication and administrative skills.
For practical experience, as our field is in engineering, so practical experience is one of the most critical integral part. We have developed and well-equipped latest equipments for our labs, which include optical microscopy labs, mechanical testing, engineering mechanics, and heat treatment labs. And we focus primarily on hands-on experience, so that students learn by their own using the and also it's integrated with the industrial experts and driven experiments. So later on we will also move you towards the live overview of our labs and show you in detail of all the equipments we have. In addition to that, in upcoming future, we are planning to have a manufacturing shed which will consist of large scale industrial scale pilot plants, and also CNC lathe, CNC milling machines, and 3D printing labs, so also foundry labs, so that we focus primarily on commercialization aspect as well, and also entrepreneurial aspect as well. And upcoming for research orientation and research scholars, upcoming we have high-end research facilities with regards to scanning electron microscopy, X-ray diffraction, as well as X-ray fluorescence. So now I would like to request Dr. Saira to discuss about our scholarship opportunities that we have available for our students. Thank you. Thank you so much, Dr. Gufran. I'm Dr. Saira. Currently, I'm working as an assistant professor in Department of Material Science and Engineering. I have my bachelor in Metallurgical and Material Engineering from UT Lahore and master reading and PhD from Bihang University, China. Most of the students and parents, when they come to me, they have two common questions. The first is, PAFIAST is a private sector or a private sector institute or a government sector, or what are the scholarship facilities available in PAFIAST? So to answer the first question is, rest assured, this institute is a government sector institute and it is chartered from the KPK government. And all the programs, either in BS or the master levels, they have accreditation from the respective accreditation bodies. And to come to the main point, the scholarship available for PAFIAST students, basically PAFIAST is providing two types of scholarships. The first, which are offered by the PAFIAST, they are known as internal scholarships. They are basically divided into two categories: merit-based scholarships and the need-based scholarship. Merit-based scholarships are categorized on the student's merit list, and then the student, if they perform, their performance based on the respective semesters. And the needs-based scholarships are basically provided for those students who are financially, they have problems, or their family background cannot provide the enough education fees. So PAFIAST University is basically not only providing the quality education, but also trying to offload the financial burden from the student as well. And then there are another kind of scholarship. Those are external type of scholarship. These scholarships are basically provided to the PAFIAST universities students from the different respective organization. Most commonly there are like Baitul Mal scholarships, Dia scholarships, and Fauji Foundations, and Shaheen Foundation scholarship, PEC, and like Pakistan Engineering Council scholarship, and there are many more as well. And in addition to that, we also provide the scholarship to the student based on their distinguished performance, and those are known as rector and the dean scholarships. You can find all the information related to these scholarships, their eligibility criteria and the requirement on our website as well. Thank you. Now Dr. Zubair will inform you the career opportunities of our department. Assalamu alaikum. I am Dr. Zubair Khan. I completed my PhD from South Korea in majoring in advanced energy and system engineering. And I served as assistant professor at the GIK Institute in early 2020, and later on I have joined this institute in 2021. As expressed by my colleagues that the materials engineering is the most demanding and important field of engineering, so what materials engineers are expected to perform in the market. Materials engineering is basically engineering of the materials, to creation of a new materials, discovery of a new methods, and the processes to create a new and useful materials. So materials engineers, basically they are responsible for creating a new materials. We skill them from to study the basic material structures from the atomic level to the product level.
where they learn the various techniques, how to synthesize, how to fabricate, how to test them. At the same time, materials engineering involves the testing and the diagnostics of the materials as well. Just like the human, you go to the hospital and you diagnose human bodies. So material scientists, they are expected to perform, or they are expected to analyze the materials life, how they are performing in the specific area. Just like let's say we can take the example of the power plant, how they are performing in the specific machinery. So we study the different behaviors, what is the strength of the material, what is the hardness of the material, how to assess them, how to interpret the results, and how to create and some useful data, how to predict some useful life or the service life of those materials. And at the same time, materials engineers are expected to produce some effective combination of the materials for the desired properties. And they need to work the various type of the industries. It's a metal and alloys, plastic industry, pharma industry, biomedical equipment manufacturing industry, automobile industry, and at the same time in the defense industry. And they are expected to produce, or they are supposed to perform various analysis or the treatments on the materials in order to get the desired properties. For example, if we want to enhance the strength or the hardness of the material, so what kind of the properties, what kind of the techniques will be useful to create such type of the materials. And even in the, you can take the example of the small computer chip or the electronic industry, that the very small, previously there were the computers at the bigger level, I mean a very huge type of the systems where they were being produced, and now you can see a very small chip can store 32 or maybe up to 64 GB of the data in a very small chip. So this is all engineering of the materials, or the creation of the new materials with the high storage. And at the same time, you can take example of this mobile phone. So previously we were using this mobile phone has internal memory of the 16 GB, and now we can get we have the phones in the market with the 512 GB of the memory. So this is all the materials engineering. And they have the very high or the attraction in the research and the development industry. So in Pakistan, still we are a developing countries, and the trend is being changed for the research and development. But in the advanced countries like Europe, USA, South Korea, or Singapore, or the Japan and the China, I mean, there is a lot of opportunity for the material scientists to enter into the field of the research and the development to create a new and useful materials. So in short, I would say that the material is everywhere, and the materials engineers, they can perform in each and every sector. In your daily life, you can see in your surrounding that every thing is engineered, or you can say that the material is everywhere. So our program is unique. We, as mentioned by the Dr. Aftab, that we have acquired a very advanced equipment from the European and the American, from European countries and America, and some of the equipment is imported from the China, to skill the students, to give them a practical exposure in order to compete in the market. So you all are, and all of the potential candidates, they are encouraged, I would encourage them to apply for this program, because this is of unique nature, with the various capabilities that we are offering to the students for their career development. Thank you very much. Okay, thank you. If you have any more questions, you can ask us through in comments. You can email us. You can message. Yes. Dr. Aftab, we have a couple of questions on yes, the social please. media for you particularly. Yeah. Mr. Ali Raja is asking that Mr. HUD, you have also worked at NUST, and now you are working at PAC Austria as well. So please tell us the difference between this NUST program and your current department program. So it may be a little challenging for you, but anyhow, I believe so you would be defining it very well for their guidance. Okay, Ali, जिस तरह हमने पहले बात की कि इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे करें फ़खशूल मेथडोलॉजी. बेसिकली डिफरेंट क्या है नस्ट का या कंपैरेटिवली कोई और यूनिवर्सिटी देख लें, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल मॉडल, हमने मॉडल जो इम्प्लीमेंट किया इम्पोर्टेड फ्राम ऑस्ट्रिया
उसमें मेथडोलॉजी क्या है बेसिकली। हम कहते हैं कि स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या इशू होता है, स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट होने के बाद उसको प्लेसमेंट में इशू आता है। जहाँ जाता है प्लेसमेंट के लिए वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस है नहीं है, आपने इस इक्विपमेंट पे काम किया, इस मशीन पे काम किया, और नहीं जी मैंने लैब में काम किया उस पर, तो उसको प्रेफर नहीं किया जाता। तो हम लोगों का मॉडल क्या है, हम कहते हैं जब स्टूडेंट 4 साल की जो डिग्री है उसी के अंदर हम उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी दें। जब वो ग्रेजुएट हो उसके पास इंडस्ट्री का 500 आवर्स 18 वीक्स तकरीबन 4 मंथ्स प्लस एक्सपीरियंस उसके पास ऑलरेडी होगा, तो फ्रेश नहीं होगा, इंडस्ट्री में उसने काम किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर एक इंडस्ट्री में उसने 500 आवर लगाए हैं, वो तो वहाँ का प्रो हो गया हुआ है, तो इंडस्ट्री भी उसको नहीं छोड़ेगी कि इंडस्ट्री भी चाहेगी कि बंदा हमारे पास आए, और उसको एडवांटेज हमें भी होगा कि हाँ जी हमारे उस इंडस्ट्री के साथ फर्दर लिंक बन गए हुए हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस आप कह रहे हैं ना, तो हम उसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि स्किल बेस्ड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग, वो हमारा एक डिफरेंस आ रहा है कि हम लेक्चर्स के अंदर भी इंडस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कि लेक्चर भी इंडस्ट्रियल 3 से 4 लेक्चर एटलीस्ट इंडस्ट्री वाला आके दे रहा है, फिर हम उसकी प्लेसमेंट भी इंडस्ट्री के अंदर 500 आवर्स के लिए कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल विजिट्स भी हम करवाते हैं। इसके अलावा जो है कोई डॉक्टर हाँ जी, मेन थिंग इज दिस द मेथोडोलॉजी एंड द स्किल बेस्ड, जो स्किल और जो टेक्निकल एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स को, उसको हम पॉलिश करना चाह रहे हैं। और एट द सेम टाइम हमारी जो है वो चाइना के साथ भी एग्रीमेंट है, हमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स, वी हैव साइंड इट फॉर 5 years, हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेजेंगे एंड दे विल लर्न अ चाइनीज़ लैंग्वेज एंड एट द सेम टाइम दे विल हैव अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। और नाउ जो सीपैक का नया प्रोजेक्ट है उसमें चाइना ने अपनी जो है वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद इंडस्ट्री को यहाँ पे शिफ्ट करना है। सो दे विल स्टूडेंट हैव अ ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ इन दोज इंडस्ट्रीज, स्पेशली जिनको चाइनीज़ लैंग्वेज आती होगी। वाई चाइना विल नॉट prioritize those students? They will have the edge on as compared to the other university in terms of the Chinese language and the practical skill. Basically ये need है Zubair, future की। can you please elaborate the methodology of Fachhochschule? I mean to say, like, this is a very unique concept which is brought in Pakistan in higher education sector. So can you please little define this Fachhochschule model for our netizens so that they could know what this Fachhochschule and how you are relating this program with this Fachhochschule? Fachhochschule is mainly different as we are introducing a technical aspect, as mentioned earlier by the other colleagues, that theoretical knowledge तो हम students अच्छी तरह acquire कर लेते हैं इन courses में, labs के अंदर भी, लेकिन हम उनको practical exposure पे, practical knowledge पे ज़्यादा से ज़्यादा emphasize कर रहे हैं। और उसमें हमने more than 4 months के जो internship program है consisting of the 500 hours, वो student ने industry में spend करना है। सो नॉर्मली जो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट को जब वो यहाँ से प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी होगा। एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो अकोमोडेटिंग, और उन चीज़ों को हम प्रमोट करें कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को। एंटरप्रेन्योरशिप का जो कोर्स है हम वेरी फर्स्ट सेमेस्टर में ही स्टूडेंट्स को वहाँ पे टीच कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट अप नॉलेज इन अ वेरी स्टार्ट। ये ना हो कि हम स्टूडेंट को 6 और सेमेस्टर में जाके पढ़ाएं और एट दैट टाइम स्टूडेंट ग्रेजुएट होने वाला और जब मार्केट में जाए तो उसको पास इतना टाइम ना हो कि वो अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सके। So related to this question, there is another very important and relevant question with that. Particularly for that reason, you must have some understandings with the industries which are working on the material sciences end. So can you please little bit elaborate that how many industries right now are in touch with you, or even you are going to collaborate further? And more on that, the Fachhochschule model is giving the opportunity to the students for the entrepreneurship. So we heard that you people have some technology part as well. So my question have the 2 parts. So I'll be requesting to you if you could actually give me a little detail of it. ओके देखें, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बेसिकली हमने अभी रिसेंटली, जिस तरह कुछ अर्सा पहले अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं बैक से तो हमें आपको पता होगा, हमने अभी ऑटो शो, पाकिस्तान ऑटो शो, वी पार्टिसिपेटेड इन पाकिस्तान ऑटो शो एंड वी हैड डिस्कशन विद ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज and we elaborated our concept of Fachhochschule methodology. Almost all of them appreciated this concept and they said this is the right thing that we are looking for. We are looking for these are kind of attributes in the graduates that you are making to do it. So वो इतने इंटरेस्टेड हुए, वो कहना जी आपको कोई हेल्प चाहिए इसमें, कोई आप हमें इन्वाइट करें, हम लेक्चर देने के लिए भी आ सकते हैं, हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो इंडस्ट्री तो हम जिस इंडस्ट्री में जाते हैं हम मेथोडोलॉजी अपनी एक्सप्लेन करते हैं, इंडस्ट्री तो इसमें बहुत ज़्यादा विलिंग होती है। इवन हतार हमारे साथ है, हतार के अंदर हम लास्ट वीक भी विजिट करके आए मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो हतार के अंदर तो इंडस्ट्रीज़ हमें अपना सेटअप, अभी रिसेंटली हमारी एक इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन हुई है,
वहाँ पे मैं फाउंड्री वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए फाउंड्री का सेटअप वगैरह भी हमें दे रहे And the हैं. name of that industry was दीवान ग्रुप. Diwan Group. The Yeah. industry जो है, you जी. people have a good ties with them, Yeah. and now they are giving you their facilities for the experimental purpose of your students as well, Exactly. which is a great success. And this is how you are bringing the change in the academia. Exactly. Pop Austria as well, and perhaps the other universities may be missing this thing as well. Like Yeah, they, maybe missing or they may be lagging, but we are the leading in this sector because we were the pioneers to initiate this concept. Okay, so we have another very relevant questions regarding the scholarships. Dr. Saira, previously, as per the numbers, I do know that around 70% students were on the scholarships in the first semester. And then what numbers you are expecting this time, because this will be the third batch, third intake of the PAC Austria. Yes, So but it will will be the you first be take. actually maintaining? Will you be maintaining the Yes, same 72. numbers? Yes, we are trying to go up to 85%. बेसिकली हम यही चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उनके ऊपर कोई बर्डन ना आए, क्योंकि हम जिस एरिया के अंदर लोकेट कर रहे हैं मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस दे आर फ्रॉम हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, ये इस एरिया से हैं, तो उनका थोड़ा सा ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है. तो वो पेरेंट्स आते हैं तो दे आस्क क्वेश्चन कि अगर हम बच्चों को भेजते हैं तो क्या हमें इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल हमारे ऊपर बर्डन ऑफ होगा या नहीं. तो वी टेल देम कि हम कोशिश करें कि हमारे स्टूडेंट मेरिट बेस पे ही इतने स्कॉलरशिप ले लें कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो वी आर ट्राइंग टू गेट लाइक 85% हमारे स्टूडेंट जो हों द स्कॉलरशिप. अच्छा, इसमें एक चीज़ इसमें और भी है कि बेसिकली जिसका हम इंडस्ट्री के साथ लिंक कर रहे थे, तो इंडस्ट्री के पास हम स्टूडेंट को जब भेज रहे हैं 500 आवर्स के लिए ट्रेनिंग भी जो बच्चा कर रहा है, तो हमारे उनके साथ डिस्कशन ये भी चाह रही है कि स्टूडेंट को स्पॉन्सर भी करें, फेलोशिप टाइप प्रोग्राम. अब उसको वो पेमेंट तो माइन्यूट सी कर रहा होगा जो कि स्टूडेंट की लाइफ के लिए सफिशिएंट होती है सस्टेन करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट के साथ ट्रेन भी हो जाएगा, स्टूडेंट के साथ एक उसके पास फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि फेलोशिप प्रोग्राम के मेरे पास जॉब सिक्योर है. वो 2 इयर्स का बॉन्ड हो सकता है, 3 इयर्स का या बॉन्ड फ्री हो सकता है. डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं. तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हर स्टूडेंट जो है वो स्पॉन्सर्ड हो, उसके पेरेंट्स के ऊपर या उसके ऊपर बर्डन ना हो, उसको या तो स्कॉलरशिप बॉडीज स्कॉलरशिप दे रही हो या उसको इंडस्ट्री दे रही है. तो एवरी स्टूडेंट शुड बी गेटिंग फंडेड. Okay, great. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है एंड दैट इज फ्रॉम डॉक्टर गुफरान. टीचिंग्स के बारे में आपने बता दिया, यू हैव द स्मार्ट स्पेसेस, लर्निंग स्पेसेस, व्हिच इज अ वंडरफुल फैसिलिटी अवेलेबल इन पाक ऑस्ट्रिया, एंड आई बिलीव सो यू आर हेडिंग इन द हायर एजुकेशन सेक्टर एज वेल, कि आप लोग की जितनी भी क्लासरूम्स हैं वो सारे के सारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पेडागोजी है टीचिंग की वो भी स्मार्ट है और एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, लेक्चर्स आर अवेलेबल. ओके, व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई होती है, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ द ग्राउंड्स, इन टर्म्स ऑफ देयर अदर सोसाइटीज एंड सो एंड सो. सो एक्चुअली जैसे मैंने मेंशन किया कि नेचुरली ये सराउंडिंग रीजन इतना अमेजिंग है कि दिस इंस्टीट्यूट इज सराउंडिंग बाय हिली एरियाज एंड द व्यू एंड वी हैव अ फुटबॉल ग्राउंड एज वेल एज क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द जो एक नॉर्मल स्टेडियम का साइज़ होता है उसके साइज़ के मुकाबले के. और उसके अलावा हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट्स, ओपन एयर जिम फैसिलिटीज़. एंड इन एडिशन टू दैट हम स्टूडेंट्स के साथ हम एक्सकर्जन और ट्रिप्स भी करते हैं जिसमें दे कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इवेंट्स. अदर देन दैट उसमें हमारी अभी रिसेंटली लिटरेरी सोसाइटी एंड इवेंट सोसाइटी स्टार्ट हुई हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने बड़ा भरपूर पार्टिसिपेट किए जो कि उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ को भी इन्हांस करता है. So it means that you have this student-centric environment. बिल्कुल. Students are actually heading their societies. They are free to utilize the academia facilities as well as for their extracurricular activities as well. एक मेरा क्वेश्चन डॉक्टर आफ्ताब से है कि आप इस प्रोग्राम में डेफिनेटली दिस विल बी द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप काइंडली अगर बताना चाहें कि इस वक्त आप कौन कौन से प्रोग्राम्स को आप लॉन्च कर रहे हैं और इनकी क्या एक्रीडेशन, बॉडी से एक्रीडेशन हो चुकी है, यू आर इन अ प्रोसेस. हमारा अंडरग्रेड प्रोग्राम बीई मटेरियल इंजीनियरिंग पीसी से एक्रेडिटेड है, ठीक है. मास्टर्स का प्रोग्राम एचईसी से होता है, मास्टर्स का प्रोग्राम एचईसी एक्रेडिटेड है. पीएचडी प्रोग्राम हम लॉन्च करना चाह रहे हैं स्प्रिंग से, तो पीएचडी का केस सबमिटेड है. जैसे ही हमें एनओसी मिलता है हम उसका एडवर्टाइज कर देंगे पीएचडी केस के उसके लिए भी. Okay, that's a great success story.
even then it's a great initiative by the Department of Material Sciences at Park Austria Fachhochschule. And last, if you want to give any message to the public for awaiting the admission, how they can actually get the admission, what is the exact process, where they want to visit, and then how they can actually fill their forms and so and so. Zubair, can you please, if you can comment? As mentioned by all of the colleagues, this program is of the unique nature, और students को हम जो है वो learning experience के साथ साथ उनको entrepreneurial and industrial exposures भी देंगे, and we will make sure कि students को जो है वो हम quality education provide करें. So this is a first of its kind, और बहुत limited university materials में, especially KPK में जो है वो बैचलर इन मटीरियल्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम एक GIK है जिसने काफ़ी अर्से पहले स्टार्ट किया था, एंड नेक्स्ट दिस आवर इंस्टीट्यूट एंड नाउ एबटाबाद यूनिवर्सिटी एंड आई हर्ड सम सवात यूनिवर्सिटी दे आर आल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. So this is of a unique nature, and all of the potential candidates, they are encouraged to apply for this program, and they will have a national as well as the international exposures in terms of the exchange program. Thank you very much. एडमिशन अभी स्टिल ओपन है, तकरीबन ऑलमोस्ट एक हफ्ता है अभी एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए. तो ऑनलाइन जो है PAFIST इसकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल अवेलेबल है. पोर्टल पे जाके क्लिक करें और अप्लाई कर सकते हैं आप इसके अंदर. Before that we end of this session, we have a very good question from Mariam Ayub. She is asking that material engineering is good for the girls or not. It's a very tricky question. I think Dr. Saira can comment better on this. Shiva herself is a material engineer. Yeah. Yes, sure. Actually हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है कि गर्ल्स इस फील्ड में आती हैं, बट क्योंकि अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ बैठी, इट मीन्स कि इस फील्ड में भी गर्ल्स क्या है, और आजकल तो वो दौर है कि ऐसा नहीं खा सकता कि बट आप एकेडेमिया में बैठी हैं जैसे, तो क्या इंडस्ट्री में भी इसकी अपॉर्चुनिटीज हैं? यस, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मेरी इवन सीनियर्स दे आर वर्किंग इन ऑल द एटॉमिक एनर्जीज अदारों के अंदर भी काम कर रही हैं. मैंने खुद काम किया है, HMC के अंदर काम किया है एज अ ट्रेनी इंजीनियर. तो फीमेल्स के लिए ना सिर्फ R&D में है पोजीशन, बल्कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडस्ट्री के अंदर. तो अब तो खैर ये कोई डिफरेंस नहीं रहा कि फीमेल्स को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. दिस इज़ द बेस्ट फील्ड. मैं इनवाइट करूँगी सबको कि वो गर्ल्स को कि दे शुड कम हियर. उनको पता डिफरेंस फील होगा, दे विल फील देयर वर्थ. सेम जिस तरह आप कोई केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है लड़की, या मैकेनिकल कर रही है, इलेक्ट्रिकल कर रही है, तो हमारा भी वैसा ही वर्क होता है. कोई हथौड़े नहीं मारने होते या कोई ऐसा काम नहीं होता. Okay, I think session was very wonderful. So with this, I would like to thank all of you and my faculty colleagues as well, and Dr. Ali Saab. Soon today हम lab visits भी आपको कराएंगे, तो we would like you to join our lab visit session later on also to show the equipments and little facilities we have. So thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.